So hello students, today we are continuing the next chapter है ना, इकोलॉजी सेक्शन में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ बढ़ रहे हैं इकोसिस्टम। टोटल इकोलॉजी में 4 टॉपिक्स हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, आफ्टर दैट इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड देन एनवायरमेंटल इश्यूज। तो इकोसिस्टम टॉपिक के साथ अब हम बढ़ेंगे। Before going to this ecosystem, one should remember what is meant by proto-cooperation. Proto-cooperation है ना, प्रोटो-कोऑपरेशन बच गया था थोड़ा सा लास्ट टाइम में, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। प्रोटो-कोऑपरेशन इज ए प्लस प्लस टाइप ऑफ इंटरेक्शन। इट इज अ प्लस प्लस टाइप ऑफ इंटरेक्शन। अब आप बोलेंगे म्यूचुअलिज्म भी प्लस प्लस है। यस, म्यूचुअलिज्म इज आल्सो प्लस प्लस इंटरेक्शन। प्रोटो कोऑपरेशन इज आल्सो प्लस प्लस इंटरेक्शन। देन व्हाट इज द डिफरेंस? सो प्रोटो कोऑपरेशन इज बोथ द स्पीशीज बेनिफिटेड, बोथ द स्पीशीज बेनिफिटेड, दोनों स्पीशीज को बेनिफिट होने वाला है। ओके, एंड both can live together, both can live together or separately also। दोनों मिलके भी रह सकते हैं, सेपरेट भी रह सकते हैं। ओके, दोनों भी मिलके भी रह सकते हैं, सेपरेट भी रह सकते हैं। दिस इज द ऑप्शन गिवन विद प्रोटो कोऑपरेशन। ओके, ये ऑप्शन नहीं था वहां पे म्यूचुअलिज्म में। आप म्यूचुअलिज्म के नोट्स चेक कर लीजिए। म्यूचुअलिज्म में आप लिखे होंगे बोथ द स्पीशीज बेनिफिटेड एंड बोथ द स्पीशीज आर ऑब्लिगेटरी एसोसिएटेड लिखे होंगे, चेक कर लीजिए। ऑब्लिगेटरी एसोसिएटेड मींस बोथ आर 100% दे आर परमानेंटली एसोसिएटेड, दे कैन नॉट लिव सेपरेटली। इफ वन पार्टनर रिमूव अनदर पार्टनर डाइज इन केस ऑफ म्यूचुअलिज्म, बट नॉट इन केस ऑफ प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन में फ्रीडम है, दोनों मिलके भी रह सकते हैं, सेपरेट भी रह सकते हैं। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सच प्रोटो कोऑपरेशन? एग्जांपल नंबर 1, क्रोकोडाइल एंड क्रोकोडाइल बर्ड इंटरेक्शन। क्रोकोडाइल एंड क्रोकोडाइल बर्ड इंटरेक्शन है ये। क्रोकोडाइल एंड क्रोकोडाइल बर्ड इंटरेक्शन इज एग्जांपल फॉर प्रोटो कोऑपरेशन, याद रखना है, ये प्रोटो कोऑपरेशन है। तो यहां पर क्या है देखिए, क्रोकोडाइल में क्रोकोडाइल क्या करता है? क्रोकोडाइल ओपन्स इट्स माउथ, क्रोकोडाइल ओपन्स इट्स माउथ। ये क्रोकोडाइल है और ये अपना माउथ ओपन करता है, एंड देन ए बर्ड विल कम हियर। एक बर्ड आ जाती है यहां पर and sit in the mouth of crocodile and clean the mouth of crocodile, remove all the leeches and unwanted food जो भी है। So that means here in this type of interaction दोनों को benefit मिल रहा है। Crocodile mouth gets cleaned by the bird and the name of the bird is itself crocodile bird। नाम ही उसका crocodile bird रख दिया गया। Crocodile bird sits in the mouth of crocodile and clean the mouth of crocodile, and crocodile is not harming crocodile bird, याद रखना है। This is proto cooperation। Second example of proto cooperation is hermit crab, hermit crab and sea anemone interaction, hermit crab and sea anemone interaction। एक क्रैब है, एक मलुस्कान शेल है। सबसे पहले ये क्रैब है, दिस इज द क्रैब, एंड ऑन द बॉडी ऑफ क्रैब वी आर फाइंडिंग, क्रैब के बॉडी के ऊपर जो है यहां पर एक सी अनीमोन है। सी अनीमोन सिट्स ऑन द बॉडी ऑफ, सी अनीमोन सिट्स ऑन द बॉडी ऑफ क्रैब। दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। सबसे पहले sea anemone is giving protection to the crab, sea anemone is giving protection to the crab, and crab is giving, sea anemone क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है, प्रोटेक्शन, and crab is giving free transport,
फ्री ट्रांसपोर्ट दे रहा है, फ्री ट्रांसपोर्ट दे रहा है। क्रैब इज प्रोवाइडिंग फ्री ट्रांसपोर्ट। सो सी एनिमोन के पास सबको मालूम है पॉइजनस टेंटाकल्स हैं, और क्रैब जो है इसको फ्री ट्रांसपोर्ट दे रहा है बिकॉज सी एनिमोन इज ऑन द बैक ऑफ हर्मिट क्रैब। ठीक है, हर्मिट क्रैब मतलब क्या होता है, क्रैब एंड द बॉडी ऑफ क्रैब इज कवर्ड बाय ए शेल, शेल है एक मलुस्कान शेल है, एम्प्टी मलुस्कान शेल। कोई मलुस्का का शेल है तो उसके अंदर जाके बढ़ जाता है दिस क्रैब। This kind of interaction is proto-cooperation. Okay. After proto-cooperation, we'll continue here. So after proto-cooperation, we'll go with continuation of the chapter ecosystem. First of all, the term ecosystem. The term ecosystem coined by A.G. Tansley. Term ecosystem given by A.G. Tansley. Okay, याद रखेंगे, the term ecosystem coined by A.G. Tansley, and ecosystem is functional unit of nature. It is functional unit of nature. Ecosystem is functional unit of nature, and ecosystem means interaction between living organisms with abiotic surroundings, interactions between biotic and abiotic components. बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स में जो इंटरेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. इकोसिस्टम मे बी एज लार्ज एज, इकोसिस्टम कितना बड़ा हो सकता है, इकोसिस्टम मे बी एज लार्ज एज ओशन, एज लार्ज एज ओशन, और मे बी small aquarium, or a drop of pond water. Drop of pond water, that is also ecosystem. Ocean can be considered as one ecosystem. एक ecosystem बोल सकते हैं ocean को, और even river को भी आप ecosystem बोल सकते हैं. Even a pond water का एक drop होता है ना, उसको भी आप ecosystem बोल सकते हैं, because if you take one drop of pond water into the microscope, you can see several hundreds of small microorganisms, bacteria, euglena, paramecium, several phytoplanktons भी होते हैं. So that means ecosystem as large as ocean बोल सकते हैं, may be small as aquarium, or may be a drop of pond water, that is also called ecosystem. Okay. Now ecosystem are of two types. There are two types of ecosystem: terrestrial ecosystem, aquatic ecosystem. Ecosystem may be of two types: terrestrial ecosystem और aquatic ecosystem. Terrestrial ecosystem में देखिए माउंटेन आएगा, माउंटेन, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, ये सब है ना टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ रहे हैं. एक्वाटिक इकोसिस्टम में देखिए वेटलैंड्स हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम में वेटलैंड्स आ रहे हैं, पॉन्ड आ रहा है, रिवर है, ओशन है, इवन एश्यूरी, एश्यूरी इज आल्सो कॉल्ड इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम. सो आउट ऑफ दिस रिमेंबर दिस एश्यूरी, एश्यूरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एश्यूरी क्या है? Estuary is the area where ocean water and river water mixes, the region where sea water and fresh water mixes, sea water and fresh water mixes.
So here comes a very important terminology, that is ecotone. What is ecotone? Ecotone is transition zone between two communities. So one community, another community, दो community का जो बीच में transition zone होगा, that transition zone is called ecotone. इसको हम ecotone बोलेंगे. Okay, Ashuri is the best example of ecotone, because Ashuri is formed by the transition of ocean water and the river water. That's why you can call Ashuri as ecotone. Ecotone बोल सकते हैं. And the species found in ecotone, जो species ecotone में होंगे, those species are called edge species. The species present in ecotone are called edge species बोलेंगे. The species found in ecotone are called edge species. ठीक है, चलेंगे. Now ecosystem में हम कंटिन्यू करेंगे. अब देखिए, what are the structural components of the ecosystem? Structural components of the ecosystem are structural components. Ecosystem मतलब imagine कीजिए, just you should have a picture in your mind. Ecosystem मतलब एक forest ecosystem है जहाँ पर several hundreds of plants are there, herbivores are there, carnivores are there, and sunlight is there, water, and so many components are interacting with each other. That's called ecosystem. So in structural component of the ecosystem, we get number one, stratification. It is a structural component of the ecosystem. Stratification एक है, species composition एक है. Species composition. What is stratification? Stratification is vertical distribution of species occupying various different levels. Vertical distribution of species. Vertical distribution of species occupying various different layers. Various different layers. So अगर आप कोई फॉरेस्ट देखेंगे तो वहां पर ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स यू कैन फाइंड. सो स्ट्रैटिफिकेशन का एक इमेजिनरी पिक्चर बनाएंगे. So in a forest, first of all, you find the larger trees. Larger trees are present, and then medium-sized plants are there. These are called shrubs, and the small plants are present called herbs. So that means vertical distribution of species occupying various different layers. Strata, strata मतलब layer होगा. Stratification बोले सो. Species composition means identification and enumeration. Identification and enumeration of all the plant and animal species present in a given area. Identification and enumeration of all species present in a given area. This is called species composition. Okay. So these are the two structural components. Whenever we visit any kind of ecosystem, maybe a garden or a desert, definitely you will find different types of species. Desert जाएंगे तो आपको cactus type के plant मिलेंगे, opuntia type के plant मिलेंगे, desert के insects होंगे. And if you go to the pond or lake, you will find different types of organisms. Biotic component and abiotic components are changing from place to place. Biotic and abiotic components changes in ecosystems. Okay, ओशियन के जो बायोटिक कंपोनेंट होंगे दे आर डिफरेंट. फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं वहां पर, जू प्लैंक्टॉन है, फिशेस हैं. अबायोटिक कंपोनेंट्स इवन वहां पर टेम्परेचर अलग है, केमिकल कंपोजिशन इज डिफरेंट. Biotic and abiotic components are changing from place to place, ecosystem to ecosystem.
After this, one should remember biotic components include what are the things? Biotic components में आपको मिलेगा देखिए प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, decomposers. These are all biotic components. Producer means all photosynthetic organism, all photosynthetic. जितने भी photosynthetic organisms हैं वो producer में आएंगे. It include algae, it include phytoplankton, all green plants. They are all producer. Consumer में आ रहे हैं देखिए all animals. Animals आ रहे हैं consumers में. Decomposer में देखिए बैक्टीरिया है, फंगाई है. Bacteria and fungi also come under biotic components. Okay. Producer, they convert sunlight energy, light energy into chemical energy. Producer क्या करते हैं? Sunlight absorb करते हैं and they convert light energy into chemical energy. Consumers, these are the animals, they eat each others. Consumers are the animals which eat other organism, other animals. ये कंज्यूमर हो गए. डीकम्पोजर मतलब ये बैक्टीरिया एंड फंगाई है. डीकम्पोजर्स आर द बैक्टीरिया एंड फंगाई. दे हेल्प इन recycling of nutrients. वो कैसे? If any plant or animal dies, upon the dead body of plant or animal who is attacking bacteria and fungi, they attack and they break down the dead matter. The dead body is broken so that minerals, all the nutrients are extracted from the dead remains and go into the soil and help in recycling. This is what biotic components. अगर हम abiotic component की बात करेंगे, abiotic already we have seen abiotic component. Abiotic component में light है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है. अभी हम जो लाइन लिखे थे, abiotic and biotic components, abiotic and biotic component changes place to place, ecosystem to ecosystem, they are variable. Yes, temperature is variable. If you go to forest, temperature is different, desert mein temperature is different, ocean mein temperature is different. That's why we are saying biotic and abiotic components are variable place to place. After knowing structural components of the ecosystem, let us go to functional components of the ecosystem. Functional components of the ecosystem. What are the functional components of ecosystem? तो सबसे पहले आएगा देखिए productivity. To run the ecosystem, what is most important? Food is very important and food include productivity. जितना भी फूड तैयार हो रहा है वो प्रोडक्टिविटी में काउंट करेंगे. The second functional component of the ecosystem is decomposition. Decomposition है, एनर्जी फ्लो है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है. These are the functional components of the ecosystem. इनको हम functional बोल रहे हैं because to run any ecosystem, these four things are compulsory, absolutely necessary. If any one fails, ecosystem fail. Suppose if can we run ecosystem without productivity? Not possible. Without decomposition? Not possible. All the four are compulsory, absolutely necessary to run an ecosystem. Okay. अभी हम जो है एक ecosystem का example ले रहे हैं, pond ecosystem. Let us see pond ecosystem. What are the different components of the pond ecosystem? सबसे पहले pond is flowing water or standing water? Pond एक standing water ecosystem है, standing है water.
like this. यहाँ पर सनलाइट है, ओके ये पॉन्ड इकोसिस्टम है. In pond ecosystem we find different types of component here. There are some on the surface of water, there are some phytoplanktons. क्या मिलेंगे सबसे ऊपर? Phytoplanktons you can find here on the surface of water. Below that, zooplankton. यहाँ पर कुछ zooplankton हैं. उसके नीचे जो है स्मॉल फिश है, small fish, and below the small fish there are some large fish. And last में यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया हैं, फंगाई हैं, बैक्टीरिया एंड फंगाई. So this is what pond ecosystem. Pond ecosystem number 1 point. This is standing water. It is a standing water ecosystem. Second point, it is self-regulated, self-regulated, self-maintained ecosystem. Self-regulated. That means there is nothing required external है ना, यहाँ पर ये self regulated है. There is no need of human supervision. Artificially maintain नहीं हो रहा है. It is going on naturally. ये self regulated है बोल रहा है. Then main source of energy sunlight. Main source of energy is sunlight. Sunlight है क्योंकि sunlight energy is going into the phytoplankton. So phytoplankton are absorbing light energy and converting it into chemical energy. तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं main source of energy is sunlight. So ecosystem is always open type. Closed type ecosystem नहीं होंगे. Open type of ecosystem because there is flow of energy from outside to into the ecosystem है ना. Sunlight की energy ecosystem में enter हो रही है. There is flow of energy into the ecosystem, that's why it is called open type. And the fifth point, so phytoplanktons are the microscopic plant like organism which do photosynthesis and prepare food. Phytoplankton are maximum numerous in number है ना, बहुत ज्यादा रहेंगे. They are numerous in number. Phytoplankton होंगे. And you have to say phytoplankton are acting as food for the zooplankton. Phytoplankton prepare food and that food is given to the zooplankton and zooplankton are eaten by small fish and small fish eaten by large fish. So energy is flowing like this, and finally after the death of the dead organism, phytoplankton, dead bodies, zooplankton, dead bodies, dead remains जो होते हैं, dead remains are called detritus. Dead remains are called detritus. Dead remains को हम detritus बोलेंगे. And these detritus undergo decomposition. Detritus का हो रहा है decomposition. So decomposition means here dead remains break down into small nutrient molecules, and these decomposition help in recycling. Decomposition is very important for the recycling of nutrient. So once a body living organism dies, the dead body is having phosphorus, magnesium, calcium, iron, all those things are extracted from the dead body and added into the soil so that minerals can be recycled. Those minerals can be reutilized again.
So that's why decomposition, we are writing decomposition help in recycling of nutrients. Okay, so this is one example of ecosystem, pond ecosystem. Now next very important basic terminology is used in the chapter that we will discuss. जैसे मैं बताया सबसे इंपॉर्टेंट होता है इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी. व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी मीन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास. The rate of formation of biomass food in the ecosystem is called productivity, and productivity is of two types: primary productivity, secondary productivity. Primary productivity means the total amount of biomass which is synthesized in plant. It is the biomass in plant. Biomass in plant. और secondary productivity क्या है? It is the biomass in animals. Every plant and animal has certain biomass with them. That biomass is nothing but food or living content. और ये primary productivity biomass in plant is again two type. One is called gross primary productivity. Gross primary productivity, and one more is net primary productivity. Net primary productivity. So that's why we have to write this one. Gross primary productivity as GPP. Gross primary productivity as GPP. Net primary productivity as NPP. Net primary productivity is NPP लिख रहे हैं. Gross primary productivity is the total biomass synthesized in plants. जो total biomass synthesize होता है plant के अंदर by photosynthesis, it is called gross primary productivity. Suppose एक plant है, ये plant जो है total है ना 10 kg food बनाया है, suppose 10 kg food. So the total food synthesized is called gross primary productivity. And plant, suppose out of 10 kg food synthesized, total food synthesized is 10 kg. If plant itself utilize 1 kg food utilized by the plant, suppose. So the left biomass in plant for consumers मतलब animals, is called net primary productivity. So many students are having doubt with GPP and NPP. So मैं उनको clear कर रहा हूँ GPP NPP through this example. Suppose एक plant है, वो total food कितना बनाया है 10 kg, and plant itself utilizing certain food. Plant out of 10 kg, plant is using 1 kg. तो plant के अंदर जो food बच गया after utilizing 1 kg of food, 9 kg food is left in the plant. That food which is left in the plant for the consumption to the consumers आके वो plant खाएंगे, and the 9 kg food is flowing to that consumer. Such food which is moving to the consumers, such food is called net primary productivity. So if I ask a question whether GPP is greater or NPP is greater, so you should tell GPP is always greater than NPP, or NPP is equal to, we can write NPP is equal to total food which is synthesized GPP minus R. This is the formula of NPP. How to find out NPP? The total food which is synthesized in plant, that is GPP, minus R कर दीजिए. टोटल जो फूड बना है GPP, उसमें माइनस R. व्हाट इज R? R refers to respiration or respiratory loss.
Plant is doing some loss, preparing food and doing some loss, that is R. So that's why we have to say NPP is always lower value, क्योंकि total food जो बनेगा minus R करना है. After doing minus R we get NPP. Okay. Now after gross primary productivity and net primary productivity, what is secondary productivity? It is the biomass synthesized in animal. The biomass synthesized in animals by consuming primary productivity. Secondary productivity is the biomass available in animals, and this biomass is synthesized after eating or after consuming primary productivity. So, if I write one example here, rabbit is feeding upon a radish. Rabbit is feeding upon a radish. So if I ask you a question here, whether a rabbit is having primary productivity or secondary productivity, you should answer rabbit में कौन सी productivity है, radish में कौन सी productivity. Radish is a plant, so it is having primary productivity. Rabbit is having animal. The rabbit is animal. That means it is having secondary productivity. क्लियर है. रैबिट एनिमल है तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगा, रैडिश में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट फॉर प्रोडक्टिविटी. यूनिट क्या चलेगी प्रोडक्टिविटी के लिए? यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ग्राम पर मीटर स्क्वायर or you can write per year also. Gram per meter square per year. So how much gram of the food is synthesized per meter square area per year in agricultural field? Suppose you are having some agricultural land. So how much food is synthesized, how much biomass is synthesized per meter square area in gram, in terms of gram per meter square per year. And this gram unit or mass unit can be converted into energy. Energy में अगर हम convert करेंगे तो किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर ऐसा बोल सकते हैं. किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. So that means mass and energy are interconvertible, आपको पता है. तो मास में ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर बोल रहे हैं, एनर्जी में किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. एंड दिस प्रोडक्टिविटी इज वेरिएबल टाइम टू टाइम, है ना. टाइम टू टाइम वेरिएबल रहेगी डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबल फैक्टर्स टू द प्लांट. ओके, ये इंपॉर्टेंट थिंग हो गई प्रोडक्टिविटी की यूनिट. अभी हम और कुछ बेसिक टर्म्स देख लेंगे आज की क्लास में. जैसे कि मैं आपको एक चीज और बता देता हूं. देखिए, फूड चेन के बारे में याद रख लीजिए आज की क्लास में. फूड चेन एंड फूड वेब. फूड चेन क्या होता है? देखिए, सपोज देयर इज अ ग्रास इट ईटन बाय ग्रास हॉपर is eaten by frog is eaten by snake is eaten by eagle. तो यहां पर क्या हो रहा है? एनर्जी इज फ्लोइंग लाइक दिस. एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम ग्रास टू ईगल. So this process of eating and being eaten by others, the process of repeated eating, लिख लीजिए फूड चेन का डेफिनेशन. The process of repeated eating and eaten by others and being eaten by others. Repeated eating and being eaten by others. It is called food chain.
repeated eating and being eaten by others. This is called food chain. और food web क्या होगा? Interconnections between several food chains. Interconnections between several food chains. Several food chain, if they interconnected, then they form food web. Okay, interconnection between several food chain, it is called food web. Let us draw. This is a linear chain is food chain always. Food chain is linear. Food web is highly branched because there will be interconnection between several food chain. Now let us convert this food chain into food web. ये food chain को हम food web में convert करेंगे. This grass can also be eaten by a rabbit. This grass can also be eaten by rabbit, and this rabbit can be eaten by snake. Grass, rabbit, snake, eagle, ऐसा बोल सकते हैं हम. And eagle can also directly take frog also. Okay. Or grass is eaten by deer, and this deer is eaten by some larger snakes. So like this, what happens? Interconnection between several food chains and several food chains. Interconnection between several food chain is called food web, and food web increases variety of food. Food web के advantages क्या हैं? Food web increases variety of food. Increases variety of food, है ना. बहुत सारी variety मिल रही है. देखिए, snake is getting so much of variety. Snake can eat rabbit someday, and snake can also eat someday frog, and snake can also eat someday deer. That means variety of food, and it also increases biomass. It also increases biomass in each trophic level. It increases biomass in each trophic level. These are the two advantages of food web. Food web में नंबर 1 एडवांटेज क्या है? इंक्रीजेस वैरायटी ऑफ फूड. एक तो फूड वैरायटी बढ़ रही है, और दूसरा है इंक्रीजेस बायोमास इन ईच ट्रॉफिक लेवल. अब आप बोलेंगे ट्रॉफिक लेवल क्या है? सो ये टर्म्स है ना, चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए, ओके. नंबर 1 फूड वेब. फूड वेब क्या है? पहले मीनिंग समझ लीजिए. फूड वेब क्लियर. इंटरकनेक्शंस बिटवीन सेवरल फूड चेन. ओके, मीनिंग क्लियर. नाउ फूड वेब के एडवांटेज क्या है? फूड वेब इज इंक्रीजिंग वैरायटी ऑफ फूड. Yes, example you can see here, snake is having so much of variety. Snake, what are the foods of snake? देखिए, rabbit खा सकता है, वो frog खा सकता है, deer खा सकता है. Variety, and it also increasing biomass in each trophic level. ये second point आपको जरा सा doubt है. Okay, that we will see. Biomass increase हो रहा है. Suppose snake is eating rabbit, means that day frog is having chance, opportunity to survive, opportunity to reproduce, opportunity to have more number of progeny. When a snake is eating deer, that means a snake is giving chance to the frog, chance to the rabbit. इससे क्या हो रहा है? बायोमास इंक्रीज हो रहा है. चलिए देखेंगे. व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल बता देता हूं मैं आपको भी. सपोज इफ आई राइट हियर ग्रास, गोट, मैन. Here grass is T1, goat is T2, man is T3. तो यहां पर क्या है? पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन, पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन is called trophic level.
इसी को हम ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी in food chain follows 10% law. Flow of energy in a food chain follows 10% law. This 10% law is also given by Lindman. Lindman proposed this 10% law. ये 10% law क्या है? Suppose grass is having some 100 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ग्रास में अगर 100 किलो कैलोरीज एनर्जी है तो गोट को सिर्फ और सिर्फ 10 किलो कैलोरीज एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड। 100 किलो कैलोरी से सिर्फ 10 किलो कैलोरी गोट में ट्रांसफर होगी और गोट से मैन में 1 किलो कैलोरीज एनर्जी ट्रांसफर होगी। दिस इज व्हाट 10% लॉ गिवन बाय लिंडमैन। ऑलवेज only 10% energy is transferred to lower trophic level to higher trophic level. सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होगी। remaining 90% of the energy, 90% of the energy lost as heat, lost as heat. Heat loss is also called entropy. Entropy. हीट लॉस को आप क्या बोलेंगे? एंट्रोपी बोलेंगे। सो जितनी एनर्जी है फ्रॉम द ग्रास, सपोज इट इज हैविंग 100 किलो कैलोरीज एनर्जी, सो ओनली 10 किलो कैलोरीज एनर्जी इज ट्रांसफर टू द गोट एंड रिमेनिंग इज लॉस्ट। Also lost heat energy is also called entropy. So entropy is also called disorder of the system. Entropy is also called disorder of the system बोलेंगे इसको। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़ते भी होंगे कि एनर्जी कैनॉट बी ट्रांसफर्ड एज इट इज 100% विथ 100% एफिशिएंसी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, देयर विल बी ए मैक्सिमम लॉस, है ना। देयर इज टू डिफरेंट टर्म, एक तो एंट्रोपी है, एक तो एंथैल्पी है। एंथैल्पी क्या होता है? टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। एक सिस्टम में कितनी एनर्जी है, दैट इज एंथैल्पी। And entropy is heat loss. Heat loss. Enthalpy क्या है? ग्रास में टोटल एनर्जी कितना, एक सिस्टम में टोटल एनर्जी कितनी है, वो एंथैल्पी हो गया। ओके, सो इवन बोथ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दोनों लॉज, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बोथ द लॉज आर अप्लीकेबल टू द फूड चेन, टू द इकोसिस्टम, आप बोल सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखिए इकोसिस्टम टॉपिक के बेसिक जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो सीखने की कोशिश की है। अभी बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द फर्स्ट फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। अभी प्रोडक्टिविटी हम पढ़ना है, प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्रोडक्टिविटी के टाइप्स, उसके एनर्जी, प्रोडक्टिविटी के टाइप्स, उसके यूनिट्स, टोटल प्रोडक्टिविटी कितना है, ये पूरे बायोमास का डिकम्पोजिशन प्रोसेस कैसे होगा, एनर्जी फ्लो कैसी होगी, ट्रॉफिक लेवल वेदर दे आर लिमिटेड और अनलिमिटेड। आई एम राइटिंग हियर T1, T2, T3, sometime food chain may have T4 and T5 also, sometimes T6 also, but unlimited trophic levels are not present in food chain. Why unlimited trophic levels are not present in food chain? There is a question. Because energy flow in food chain follows 10% law, and bigger food chain, larger food chain means more trophic level, or more trophic level means very less energy available. Okay, so in today's class we have taken the basic introduction to this chapter, ecosystem. In next class we will continue with productivity decomposition. Okay, we will stop here. Thank you.